अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्केयर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर 1 एक्स स्केयर। नाउ लेट n इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस x4 प्लस 1 एंड d इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्केयर एज इट इज improper फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट प्रॉपर बाय डिवीजन। इनको हम डिवाइड कर लेंगे, x4 प्लस 1 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स के बाहर रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x4 प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ये जो हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो हमारे पास रिमाइंडर बचा डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1। नाउ टेक x square plus 1 over x square into x minus 1 is equal to a over x plus b over x square plus c over x minus 1. Now multiply both side by x square into x minus 1, we get x square plus 1 is equal to ax into x minus 1 plus b into x minus 1 plus ax square. So from x minus 1 is equal to 0, we get x is equal to 1. Put x is equal to 1 in equation 2, we get value of c which is 2. Now to take x is equal to 0, so put in equation 2, we get from here b is equal to minus 1. Okay, and now from equation 2, x square plus 1 is equal to x square minus ax plus bx minus b plus x square. We take x square as common, we get a plus c. We take x common, we get b minus a minus b. So compare coefficient of x square and both sides, we get a 1 is equal to a plus c is, and c is equal to 2, we know that. So we get a is equal to minus 1. Put values of a, b, c which we have already found in equation 1, we get x square plus 1 over x square into x minus 1 is equal to minus 1 over x minus 1 over x square plus 2 over x minus 1. So x plus 1 minus 1 over x minus 1 over x square plus 2 over x minus 1. So question number 4 इसका हमारा complete, hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.